Hello, everyone. Welcome to Botany Insiders League of interviews that we have on our platform starting from today. So, as we all know that we have got our CSIR UGC December 2023 examination results in hand. So, बॉटनी इंसाइडर के एंड से रिजल्ट ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है लाइक एज यू नो इन आवर प्रीवियस अटेम्प्ट एज वेल जून का एग्जाम था वी हैड अ लॉट ऑफ रैंकर्स सो एज इन दिस टाइम एज वेल बहुत सारे रैंकर्स हमारे बहुत सारे जो कोर्सेज चल रहे थे वी हैव देम फर्स्ट guest that we have on our platform is Shivangi Kataria. She qualified LS examination. She'll be introducing herself and telling more about it. Hi, Shivangi. Welcome to Botany Insiders platform. Hello, ma'am. Thank you so much. So, I'm Shivangi Kataria. I have done my graduation in biotechnology from Bhopal itself, and I've done my master's in medical biotechnology from Bharatiya University, Coimbatore. And I have cleared CSIR NET December 2023 with AIR 32 in LS category. Congratulations on this particular achievement. So, in this entire one-on-one conversation, I would want you because बहुत सारे students अब जून के एग्जाम की तैयारी करेंगे and every single student face this particular thing कि preparation start कैसे करनी है and those who qualify they know a bit extra and I won't say just extra they have a better experience in the same, right? So I would want you to share your strategy for the same, like what was your strategy, how did you proceed forward? What was it? Yes, please explain. Ma'am, first of all, I started preparing by myself. So when I started preparing, there were a lot of resources. There were a lot of books, standard books especially. So everyone was about like we have to study standard books and all. But they are so in depth and so much deep. So it is not possible to cover all the books within 6 months. And so I asked many people that what kind of strategy should I apply. So I heard about you, so I decided to join Botany Insider for the concise and for the topic wise strategy and for the topic wise preparation. So I enrolled into your full course when I got to know about Botany Insider and you. So from that day on, I started my journey with you, and I attended your classes. If not live, not possible. So I attended recorded sessions, and then I practiced questions. I used to ask doubts also, like on WhatsApp. So it was really helpful. You used to reply with all the explanations. Thank you for that also. So I practiced and revision is must. Like in the last 2 months, I stopped adding up any new topic. I just focused on revision only. So that's very important because जो revision है that's the most important part. बहुत सारे students क्या गलती करते हैं when they start preparing उन्होंने 1000 topics complete कर लिए और exam से एक दिन पहले भी कुछ नया add on कर रहे हैं. But the most important thing which I think is revise करना बहुत जरूरी है and in addition practice करना बहुत जरूरी है, which something that I focus upon in my all the courses, whether it's a crash course, whether it's a full course, whether it's a practice session course, हर कोर्स के अंदर the main priority is कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना एंड ये समझना कि हमने सेल साइकिल पढ़ा है फॉर एग्जांपल उसको अप्लाई कैसे करना है. दैट एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किस पर्टिकुलर पार्ट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है. सो आई वुड वांट यू टू टेल अबाउट दैट. कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, तो जितने बन रहे हैं और जितने क्वेश्चंस के बारे में आप कॉन्फिडेंट है, लाइक 100% कॉन्फिडेंट है, और अगर उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपका स्कोर एक डिसेंट स्कोर बन रहा है जिससे इजीली क्वालिफाई कर सकता है, सो वी डोंट नीड टू टेक एनी रिस्क. बट अगर एग्जामिनेशन में ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम जा रहे हैं, तो आप 90% लाइक अगर आप श्योरिटी है कुछ क्वेश्चंस पे, तो आप उन पे एक बेट ले सकते हैं इफ यू आर नॉट स्कोरिंग दैट मच रिजल्ट.
एंड मैंने अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो पार्ट ए में मैंने 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि बहुत टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ गया था मेरे से। और पार्ट बी में आई अटेम्प्टेड अराउंड 22 क्वेश्चंस, एंड पार्ट सी आई अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस। सो पार्ट ए में मेरे सारे सही थे, बट जो मैंने मार्क्स लूज किए दैट वाज इन पार्ट बी। एंड पार्ट सी में भी ऑलमोस्ट मेरे सही थे, आई थिंक 2 और 3 पार्ट सी में मेरे गलत थे, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी वर रॉन्ग इन माय केस. So maybe the practicing of the theory part was getting a bit lag, right? Because I guess you are a very good percentile also. इस बार CSIR ने कुछ ज़्यादा high cutoff डाल दिया, पता नहीं क्यों, जिसकी वजह से बहुत सारे students disappointed हैं, because 99.2 is a lot for getting into the JRF thing, and that too for a general category student. Anyway, Yes. but still you managed out to qualify LS. That's a very, very good thing. And you always wanted to get through this lecturership early. As you told me in the very beginning also, ma'am, LS karna hai mujhe complete. That's very nice. Now, the next thing I would like to ask you कि sources हमें क्या क्या रखने चाहिए, like because बहुत सारे sources available हैं. So what should be your source? What should be your strategy? अगर कोई student लेट्स से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, मुझे सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, तो सोर्सेज हमें क्या करने चाहिए यूज? एज आई मेंशन अर्लियर कि मैंने भी प्रिपरेशन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोचिंग कोई ज्वाइन करूंगी. मैंने भी सेल्फ प्रिपरेशन से ही स्टार्ट किया था, बट सोर्सेज इतने ज्यादा हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि किस लेवल तक किस टॉपिक को खत्म करना है. तो उसके लिए तो ये सजेशन रहता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, स्पेशली बॉटनी इनसाइडर. अगर आपको एक बहुत कंसाइज पोर्शन कवर करना है, एक स्ट्रैटेजिकली और एग्जाम ओरिएंटेड, बिकॉज द मेन मोटिव इज टू क्रैक द एग्जाम. अगर आपको टॉपिक कवर करना है तो आप कोई भी बुक्स अवेलेबल हैं, बट द मेन मोटिव इज टू क्रैक द एग्जाम. तो जितना कंसाइज है और जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि बुक्स में तो सब कुछ दिया रहेगा, बट वो एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमको प्रिपेयर करना है, तो PYQs इज मस्ट, जैसे आप हमेशा स्ट्रेस करते हैं अपने सेशंस में भी और PYQ प्रैक्टिस में भी. तो PYQ इज मस्ट. एंड सोर्सेज तो यही रहेगा कि जितना कम हो सके उतना ज्यादा अच्छा है. कम और रिपीटेड रिविजन वुड बी बेटर. That's a very, very good thing. Like, make sure कि आप चाहे 150 टॉपिक्स करो, like just a vague number. टॉपिक्स कम करो, लेकिन जितने टॉपिक्स करो वो अच्छे से करो, ताकि whatever output that you want. Because students, जैसे अभी शिवांगी ने भी बोला, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टॉपिक के पीछे 15 दिन खराब कर रहे हैं कि मुझे सेल साइकिल एकदम फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ना है, एंड देन दे वांट कि हमारा एग्जाम भी क्वालिफाई हो. उसके लिए 3 साल लगेंगे बहुत आराम से, इफ यू वांट टू रीड द एंटायर स्टैंडर्ड बुक. बट अगर हमें कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है, एंड दैट strategic and smart preparation, I would say, which something we focus upon in our courses as well. चाहे कोई भी कोर्स हो, कोर्स हो ना क्रैश, we never differentiate कि यहाँ पर 4 लाइन कम पढ़ानी है, यहाँ पर 4 लाइन ज्यादा पढ़ानी है. After a point, you have to do every single thing, right? Now, next question to you would be, what should be the strategy for revising? Because students बहुत सारे बोलते हैं कि मैम रिविजन करना है, but how to revise, revise करने का तरीका क्या होता है, which many students lag in that. So can you share some tips on that? Yes ma'am. जैसे कि जो पहले टॉपिक्स कवर किए हैं उनको जब आप कोई सेकंड टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक अगर पढ़ने जा रहे हैं, तो साथ ही साथ में एक टाइम पीरियड रखिए कि जिसको आप रिवाइज करते जाएं. और मैंने 2-2.5 महीने पहले ही सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद मैंने 2 बार कंप्लीट और डिटेल्ड रिवीजन किया, और अराउंड 2.5 टाइम्स इस तरीके से मैंने क्विक रिविजन्स किए बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस. मैं क्वेश्चंस करती थी, एंड व्हाट आर टॉपिक्स आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, देन आई विल गो बैक टू दैट टॉपिक एंड देन रिवाइज इट अगेन. But first 2 times I did complete or detailed revision, because detailed revision भी बहुत जरूरी रहता है. And then I switched on to quick revisions and short notes.
Perfect. And what about the notes thing? Like, is it compulsory for the student to make short notes या फिर notes का क्या strategy रहना चाहिए? Because we have hard copy notes available on our platform. Many students say कि मैम हम अगर ये notes लेंगे क्या ये enough है? So you also like हमारे course के अंदर hard copy notes available होते हैं साथ में. So did you make your own notes or how did you use them? यस मैम, डेफिनेटली खुद के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज जो वहां पे लिखा होता है वो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है. सो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में जो भी शॉर्ट नोट्स रहता है वो आप लिखिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू दैट नोट्स अगैन एंड अगैन. If you will make your own short notes, it would be quite easy to revise it again and again, क्योंकि short notes कम टाइम भी लेंगे और जो इम्पोर्टेंट है आप वो चीज लिखेंगे, और जो चीज आप भूल रहे हैं तो अगर आप वो चीज लिखेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में, सो इट वुड डेफिनेटली गिव यू एन एज. It's a very important thing because every single day I get a query that मैम मुझे हार्ड कॉपी नोट्स लेने हैं बट मेरे पास खुद के नोट्स बनाने का टाइम नहीं है. सो क्या ये लेके मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा? आप 1000 बुक्स भी ले लोगे बट इफ यू डोंट स्टडी फ्रॉम दैट इट इज नॉट गोना हेल्प यू, राइट? अगर इवन इफ यू वांट हैव नोट्स, take them, use them to the best of your ability, and उसी के अंदर चाहे additions करो, but those additions are very very important, right? Now my next question to you would be, let's talk about individual session, like जो जो अलग अलग पार्ट होता है उसकी strategy क्या होती है. Let's start with part C because part C is like complete experimental, part B is completely theoretical. So क्या इन दोनों की preparation अलग अलग करनी चाहिए और will it go in a one-on-one manner? सिलेबस बीइंग द सेम, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिफर कर सकती है. लाइक अगर हम पार्ट सी की बात करें तो इट विल रिक्वायर मोर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. लाइक अगर हमने एक बार रीड कर लिया, पार्ट सी इज मोर ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज. तो अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया, सो हाउ टू अप्लाई इट, इट वुड ओनली बी फ्रूटफुल इफ वी प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर नॉलेज का एप्लीकेशन होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. बिकॉज पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है और एनालिटिकल रहता है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा. लाइक पार्ट सी अपार्ट फ्रॉम थ्योरी, थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि अगर क्वेश्चन करना है तो. साथ में अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी इज कंप्लीटली कंसेप्चुअल. इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी. अगर मेमोरी अच्छी है, नहीं भी अच्छी है तो भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा. तो इट्स ऑल अबाउट मेमोरी बेस्ड. लाइक देयर इज नो नथिंग इन बिटवीन. येस और नो में ही आंसर रहता है, लाइक वेदर यू नो इट और नॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट बी एंड सी. पर पार्ट बी वी हैव कि हमें थ्योरी पे फोकस करना है, बट थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी एनी विच वे अगर पार्ट सी भी करना है. सो द प्रेपरेशन गोज इन द सेम मैनर, बट question attempting strategy changes, right? The way we are attempting the question, that is going to change. So make sure कि part B के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना. For example, अगर हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, सेल साइकिल के अंदर ही अगर हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो वो क्वेश्चन हमारे थ्योरी में आएंगे. उसी का अगर हम एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल पार्ट में जाएंगे, लाइक जो सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, सो दैट वुड कम इन पार्ट. So you have to understand कि questions को कैसे deal करना है, and that you get only when you answer the questions very very effectively, right? So these were the very very important tips that he gave. Any additional tips that you want to add into it, or any suggestion you want to give to the students who are preparing for the June examination? Revision is must. Without revision कुछ नहीं होगा. And keep your sources very limited because बहुत ज़्यादा like life science is like a vast ocean. जितना पढ़ेंगे उतना कम है. But does this exam demands this, हमको ये समझना पड़ेगा. So एग्जाम को ध्यान में रख के जो भी एग्जाम का डिमांड है उसको पूरा करते हुए हमको सिलेबस को कवर करना है. PYQs आर लाइक द बाइबल. सो उनको फॉलो करके आप अपना सिलेबस बना सकते हैं. जैसे मैम ने भी शेयर किया था कि उनने अपना खुद का सिलेबस बनाया था, तो उस तरीके से हम भी कर सकते हैं. तो PYQs पे पूरा पूरा ध्यान देना है. एंड देन रिविजन इज द thing and limited resources. So this is what. Okay, so we have very good short points with us. Repeated revision,
previous year question practicing, and conceptual understanding of the topic. And you're looking for, if you're looking for any of these, any of the thing or all the things together, then you have Botany Insider application for you all. You can download our application. It's available on iOS and Android, both the applications. All the links are in the description box. And if you feel like that Botany Insider has like helped you out with the previous sessions, and we'll obviously continue to help you out in the further sessions as well. So please make sure to hit the subscribe button. Let's hit 20K very soon. We have been working very, very hard for you all. So let this knowledge get spread as much as possible. And with this, Shivangi, would you like to add on anything else related to what help did you get from our end, or how was your experience with Botany Insider? It was really great, ma'am. Right from the first day when I purchased the course, it was really helpful. I was just waiting for the hard copy notes, and Did you get um, it on time? yes. Then I used to attend the class, and ma'am used to keep us motivating. And also for the part A, you take that Saturday sessions. They were like my favorite. Especially, I would wait for those sessions. So she is like, she'll keep supporting you. She'll keep motivating you. She'll keep teaching you. She's like, you know, elder sister. So you can follow her, and you can join her courses. Thank you so much for these words. So, with this, we have come to the end of this particular session. Thank you so much for taking out time. All the very best for whatever you have planned. I hope that you get a lot and lot of success in life. And I'm really, really thankful that you appreciated us, because we helped you out in a bit, whatever manner it was possible. So, thank you so much for you to take out time. And thank you so much, everyone, for watching this video. Make sure to hit the subscribe button, follow us on Instagram, Telegram, WhatsApp channel, whatever you feel like, just follow us and just share the channel as much as possible. We are trying to help you out in the best manner. Thank you for watching this video. All the very best. Thank you, Shivangi, and thank you all the other students for watching. Let's meet in the various other interviews very, very soon. We have planned a lot of interviews for you all so that we can help you out in preparation of the June examination. Bye, everyone. Take care.